अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत ही मेहरबान नहायत ही रहम वाला है। टुडे माय टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ कार्बोहाइड्रेट। Carbohydrate is essential component of the human survival in the body. Carbohydrate is basically defined as carbohydrate or aldehyde or ketone compounds with multiple hydroxy groups. कार्बोहाइड्रेट एल्डिहाइड और कीटोन कंपाउंड होते हैं जिनके पास मल्टीपल हाइड्रोक्सल ग्रुप होते हैं। फंक्शन सर्व एज एनर्जी स्टोर्स, फ्यूल एंड मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट। राइबोज एंड डीऑक्सीराइबोज शुगर फॉर्म पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क ऑफ आरएनए एंड डीएनए। पॉलीसेकेराइड और स्ट्रक्चरल एलिमेंट इन द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया एंड plants. Cellulose, the main constituent of plant cell wall, is one of the most abundant organic compound in the biosphere. Carbohydrates are linked to many protein and lipids where they play a key role in mediating interaction among cells and interaction between cell and other element in the cellular environment. Carbohydrates are broadly defined as polyhydroxy, aldehyde or ketone and their derivatives as substances that yield on these compound. कार्बोहाइड्रेट पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड होते हैं एल्डिहाइड और कीटोन्स के, जो कि हाइड्रोलिसिस के वक्त ये कीटोन और एल्डिहाइड देते हैं। कंपोज्ड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट के अंदर कार्बन होगा, ऑक्सीजन होगा, हाइड्रोजन होगा। फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इंक्लूड हाइड्रोक्सल ग्रुप। जो फंक्शनल ग्रुप होगा वो हाइड्रोक्सल ग्रुप है। ओ इंडिकेट शुगर। ओ ऐसी जिसके आखिर में आएगा वो शुगर को डिफाइन करेगा, जैसे ग्लूकोज। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट आर बेसिकली क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स. Monosaccharide consist of glucose, fructose and galactose. Disaccharide consist of sucrose, lactose and maltose. Oligosaccharide consist of raffinose, stachyose. Polysaccharide consist of starch, glycogen and cellulose. Monosaccharide having only one single sugar unit, but disaccharide consists of 2 monosaccharide sugar unit. Oligosaccharide consists of 2 to 10 unit of sugar molecules. Polysaccharide 10 or more than 10 millions of thousands of hundreds of units. These are the structures of carbohydrates. Monosaccharide having only one sugar unit. Disaccharide having 2 units of sugar, but polysaccharide contain many hundreds of sugar units attached by the glycosidic bond. These are the structures of the sugars: ribose sugar, D-ribose, deoxyribose, glucose, galactose, lactose. Carbohydrate classification on the basis of number of monomer unit monosaccharide present in a carbohydrate. Carbohydrates are classified into the following classes: monosaccharide, oligosaccharide, polysaccharide. Monosaccharide are carbohydrates with 3 to 7 carbon in their backbone. Oligosaccharide are carbohydrate with 2 to 20 monosaccharide unit bonded together by glycosidic bond. Polysaccharide are carbohydrate with more than 20 monosaccharide units bonded together by a glycosidic bond. Monosaccharide form monomers, building block for longer and complex carbohydrates. Monosaccharide have 2 families, ketose and aldose. For example, glucose, ribose, fructose, galactose. Oligosaccharide, for example, lactose, saccharose, maltose, trehalose. Polysaccharide can be 2 types: homopolyglycan and heteropolyglycan. For example, cellulose, starch, chitin, hyaluron. These are the examples of monosaccharide, oligosaccharide and polysaccharide. These classification of carbohydrates are based on the monomer unit attached to the carbohydrate unit: monosaccharide, oligosaccharide and polysaccharide.
हेल्दी सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। आया कार्बोहाइड्रेट्स के कौन कौन से सोर्सेज हैं? कार्बोहाइड्रेट्स के सोर्सेज में राइस चावल आ जाते हैं, पोटैटोज़ आलू आ जाते हैं, ओट्स यानी बीज आ जाते हैं, पास्ता आ जाता है, वाइट पोटैटोज आ जाते हैं, कीनोआ आ जाता है, वेजिटेबल्स आ जाती हैं, होल व्हीट ब्रेड आ जाता है, फ्रूट आ जाता है। ऑलमोस्ट 90% ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इज प्रेजेंट इन wheat crop. The flour we eat made up of wheat. This is the source of carbohydrates. Sugar patient can avoid to eat wheat crop because this is the very wide source of carbohydrate. The treatment of sugar is the avoid of carbohydrates. Carbohydrate is the sugar.